Hello everyone, welcome to NCC YouTube channel. Today we are going to discuss the format of banking company's final account. This video is related to introduction concepts of financial statement of banking company account. The third schedule under section 29 of Banking Regulation Act 1949, the format of balance sheet and profit and loss account has been amended by Government of India. So, new format of accounting forms of balance sheet and profit and loss is in vertical forms. Here, Form A is related to balance sheet and there are 12 schedules. Okay. And Form B, which is related to profit and loss account, there are 4 schedules. This is a Form A, form of balance sheet. यहाँ हम राइट करेंगे कैपिटल लाइबिलिटीज. दिस इज अवर हेडिंग. कैपिटल, दिस इज अवर शेड्यूल नंबर 1. In this schedule, there is some authorized capital issued, subscribed, called up, capital is taken. Okay. If there is any unpaid calls which are deducted from called up capital. So, schedule number 1 is related to capital structure. Okay. Reserve and surplus, this is our second heading which comes in schedule number 2. So, schedule number 2 is related to reserve and surplus. Under this schedule, any reserve like statutory reserve, cash reserve, share premium are transferred. Okay. According to Banking Regulation Act, at least 20% of its profits transferred to statutory reserve. This is a rule of Banking Company Act. Okay. Schedule number 3, deposits. Okay. This is the schedule number 3 which is related to deposit. In this schedule, deposit such as demand deposit, saving deposit, current deposit, fixed deposits are come. जब भी कोई बैंक कस्टमर से डिपॉजिट का मनी डिपॉजिट करते तो वो सब डिपॉजिट इसमें आ जाता है, डिपॉजिट में आ जाता है. सो शेड्यूल नंबर 3 is related to deposits. Next, borrowing. Schedule number 4. Borrowing means it includes borrowing from Reserve Bank of India, Commercial Bank, Industrial Development Bank of India. ये सब schedule number 4 में आ जाएगा. Okay. So, here bank borrow money from the institutions from the Reserve Bank of India. So, sometimes loan taken by the bank also. Okay. So, this all comes in borrowing schedule. Okay. Next, other liabilities and provisions. Schedule number is 5. Okay. It includes bills payable, interest accrued, then inter-office adjustment, balances, any provision like taxation. So all these come on other liabilities and provision. बैंक की जो भी लाइबिलिटीज रहेगी, बैंक की जो भी प्रोविजन रहेगा, वो सब क्या हो जाएगा, इस पे आ जाएगा. ओके. सो दिस इज द लाइबिलिटी साइड शेड्यूल. नेक्स्ट, वी कैन राइट हियर असेट. दिस इज अवर हेडिंग. एंड इन असेट साइड देर इज अ कैश एंड बैलेंस विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, and this goes to schedule number 6. So, schedule number 6 is related to this cash and balance with Reserve Bank of India. In these schedules, balances with Reserve Bank of India in current accounts and other accounts are included, and also if any cash in hand it comes in this schedule. Okay. So, whenever bank रिजर्व रखती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, तो ये भी पैसा, ये भी अकाउंट इस शेड्यूल में आ जाते हैं. ओके. उसके बाद बैलेंस विथ बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिसेस, दिस कम्स इन शेड्यूल नंबर 7. बैलेंस विथ बैंक्स इन करंट अकाउंट एंड अदर डिपॉजिट अकाउंट्स इज included in this schedule. Also, any money at call and short notices
Also, balances with outside in India in current account, deposit account and money at call and short notice come this schedule. Then investment. This is schedule number 8. Okay. Investment in India in government securities, shares, debenture and bonds, etc. Also investment in outside in government securities, subsidiaries and other investment. जो भी इन्वेस्टमेंट रहती है वो इन इंडिया में और आउटसाइड वो सब इन्वेस्टमेंट इन दिस शेड्यूल आ जाती है. Then advances, which is related to schedule number 9. Any advances comes in this schedule. So what is the advances? It includes bills purchased and discounted, cash credit and overdrafts and loans repayable on demand. जो भी बिल्स परचेस किया बैंक ने उसका पैसा बैंक को एक समटाइम्स मंथ्स में मिलने वाला रहेगा, तो उसे भी हम एडवांसेस बोलते हैं. बिल्स परचेस एक एडवांस टाइप है. अगर कोई बिल्स डिस्काउंट किया होगा वो भी, जैसे कि बिल्स पेबल वगैरह, तो वो सब यहाँ एडवांसेस में आ जाते हैं. उसके बाद फिक्स असेट, शेड्यूल नंबर 10. फिक्स असेट includes the fixed asset like premises, furniture, fixtures, ये सब फिक्स असेट में आ जाता है. और टाइपराइटर, कंप्यूटर, ये भी फिक्स असेट में आ जाते हैं. उसके बाद अदर असेट्स, इट इंक्लूड्स स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टैम्प्स, पोस्टेजेस. ओके. नॉन बैंकिंग असेट्स एक्वायर इन सेटिस्फैक्शन ऑफ क्लेम्स, इंटरेस्ट एक्रूड, एडवांस टैक्स पेड इन एडवांस, ये सारे अदर असेट्स में आ जाते हैं. और उसके बाद कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़, अगर बैंक की कोई कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ रहेगी वो सब इस शेड्यूल में आते हैं. इस शेड्यूल का नंबर है 12. इट इंक्लूड्स लाइबिलिटी फॉर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट लाइक शेयर्स, डिबेंचर एक्सेट्रा, acceptance and endorsement and other obligations, other liabilities which bank is contingently liable. So ये सारे आइटम शेड्यूल नंबर 12 में आ जाते हैं. ओके. सो this is the liability schedule 1 2 3 4 5 and this is the asset schedule. okay. अब हम देखेंगे फॉर्म बी. फॉर्म बी फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसमें हम फर्स्ट राइट करेंगे इनकम, और फर्स्ट है इनकम अर्न विच इज रिलेटेड टू शेड्यूल नंबर 13. ओके. इनकम अर्न विच इज रिलेटेड टू शेड्यूल नंबर 13. This is the main source of income of bank. Okay. Interest on loans, advances, overdrafts, cash credit, income on investments, interest on balance with RBI, ये सब शेड्यूल नंबर 13 में आ जाएगा. ओके. सो जब भी बैंक लोन देती है तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसे वो इंटरेस्ट बैंक का इनकम होता है. सो मैंने बोला कि दिस इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम. ये क्या है? मेन सोर्स ऑफ इनकम. ओके. नेक्स्ट अदर इनकम विच इज रिलेटेड टू शेड्यूल नंबर 14. ओके. अदर इनकम इट इंक्लूड्स सर्विसेज गिवन बाय बैंक and get income through commission, exchange, brokerage, profit on sale of investment, land and other asset, or any other miscellaneous income which comes in the other income in schedule number 14. okay. So 13 and 14 is related to income. Then we write here expenditure. This is our heading, and first is interest expended. This is related to schedule number 15. शेड्यूल नंबर 15 में क्या होता है कि इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, बोरोइंग फ्रॉम RBI एंड अदर बैंक्स, ये सब इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में आ जाते हैं. दैट इज़ द एक्सपेंडिचर ऑफ द बैंक. जो भी डिपॉजिट है उसका इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ता है. सो दैट इज़ द एक्सपेंसिस ऑफ एनी बैंक. सो ये इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में आ जाते हैं. उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विच इज रिलेटेड टू 16. ओके. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक रेंट, रेट्स, टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, depreciation on bank's asset, law charges,
postage, telegrams, repairs, advertisement and other expenditure comes in this schedule. So this is the expenditure schedule. Okay, so 13 and 14 is our income schedule and 15 and 16 is our expenditure schedule. Okay, उसके बाद हम यहाँ राइट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस. सो हियर इज अ नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर and second is net profit brought forward. So whenever net profit or loss for the year means this is our income 13 and 14, we can get the income, and 15 16 is our expenses, so we can get the expenditure. So this total is less from this total, the income is less from the expenses. Whenever we get the profit we can write here. So net profit or loss meaning क्या होता है कि इनकम से हमने एक्सपेंडिचर माइनस की और जो भी अमाउंट आ जाएगी वो. जब भी हम प्रॉब्लम करेंगे तब इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी. उसके बाद नेट प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड मीन्स अगर कोई प्रीवियस ईयर्स बैलेंस है प्रॉफिट का तो यहाँ हम क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे. सो नेक्स्ट इज एप्रोप्रिएशन. ओके, सो फर्स्ट इज ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व. whenever we can get the profit in this year, so 20% is kept aside as a statutory reserve or transferred to statutory reserve. This is the rule of banking regulations act. Then transfer to other reserve, any other reserve अगर रहेंगे तो भी हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे और जो भी बैलेंस रहेगा this goes to the balance sheet. This is our net profit. Okay, so this is the form B. If you like video, please like, share, subscribe and comments. Thank you.